स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, यूनिट फर्स्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। करेक्ट, केमिकल रिएक्शंस आपने वॉच की है। ठीक है, बहुत सी केमिकल रिएक्शंस आपने ऑलरेडी स्टडी की हो। आपने देखा होगा सपोज फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट बनता है और जो रिएक्टेंट होते हैं वो ऑलवेज सेम पढ़ाए गए होंगे आपको, है ना। जब 6th 7th जब जिस क्लास से भी रिएक्शंस आपको आई हैं, तो ये जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं, एक्चुअल में ये केमिकल रिएक्शंस कुछ पर्टिकुलर लॉज को फॉलो करते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस ये जो पर्टिकुलर लॉज हैं जिनको फॉलो करते हैं, उन्हीं लॉज को हम कॉल करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। करेक्ट, सो वेरी सिंपल, केमिकल रिएक्शंस बिटवीन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस are governed by some laws. These are known as laws of chemical combinations. Correct? That means chemical reactions जो कि two and more than two substances के between होती है, वो पर्टिकुलर कुछ लॉज को ओबे करती हैं, फॉलो करती हैं। ये जो लॉज हैं जिनको केमिकल रिएक्शंस फॉलो करती हैं, ओबे करती हैं, इन लॉज को ही कॉल किया जाता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। एंड दीज लॉज आर, फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस लॉ इज पुट फॉरवर्डेड बाय लोमोनोसोव in 1756. Second law is law of constant or fixed or definite proportion. Law of constant proportion, law of fixed proportion, or law of definite proportions. This law is put forwarded by Louis Strauss in 1799. And third law is law of multiple or simple proportion. Law of multiple proportion or law of simple proportion. This law is put forwarded by John Dalton in 1803. 1803. And our fourth law is Gay-Lussac's law of gaseous volume. This is proposed by Gay-Lussac in 1808. 1808. And our fifth law is Avogadro's law, put forwarded by Avogadro in 1811. तो ये हमारे बेसिक लॉस हैं। इन लॉस को सारी रिएक्शंस फॉलो करती हैं। अब हम वन बाय वन इन रिएक्शंस, इन ये जो लॉस हैं, इनको स्टडी करेंगे। देन इन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, आवर फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, given by a Russian scientist Lomonosov in year 1756. This is very simple law and says matter can neither be created nor be destroyed. That means we cannot create matter and nor unable to destroy. हम मैटर को क्रिएट भी नहीं कर सकते और उसको डिस्ट्रॉय करने में भी हमारी कैपेसिटी नहीं है। उसको चाहे तो भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मैटर neither be created nor be destroyed. This is first law. Or you can also say in all physical and chemical changes, the total mass of the reactants is equal to that of the products. That means किसी भी केमिकल और फिजिकल चेंज में जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनका टोटल मास उस चेंज में बनने वाले प्रोडक्ट्स के टोटल मास के इक्वल होता है। करेक्ट, चलिए इसको हम एक एग्जांपल से भी समझते हैं। NaOH reacts with HCl and gives NaCl with H2O.
NaOH and HCl gives NaCl and H2O. Here, atomic mass of Na is 23, oxygen 16, and hydrogen 1. Total mass of NaOH is 40. Same as atomic mass of hydrogen is 1 and chlorine is 35.5. Then total mass is 36.5. Again, atomic mass of chlorine 23, sodium 23, and chlorine 35.5. Total 58.5. In H2O, total mass of hydrogen is 2 and oxygen is 16, and total mass of H2O is 18. Correct? See, 40 plus 36.5, it is equal to 76.5, and here also 58.5 plus 18 is equal to 76.5. That means mass of reactant is equal to mass of product. Correct? So, in this example, in this chemical equation, the total mass of reactant is 76, and that of product is also 76.5. That means this law is correct. And in laws of chemical combinations, second law is law of constant proportions, or law of fixed proportion, or law of definite proportions. This law states, this law given by French chemist Louis Strauss in 1799, and states a chemical compound always consists of the same elements combined together in the same fixed proportions by weight. In a chemical compound, always consists of the same elements combined together in the same fixed proportion by weight. That means कोई भी XYZ केमिकल कंपाउंड हो, उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसका रेशो ऑलवेज सेम हो. ठीक है, एलिमेंट्स का रेशो कंपाउंड में कभी भी चेंज नहीं होगा. ठीक, इसको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. वाटर दैट मींस H2 may be obtained from chemical reactions or natural sources like river, well, etc. Correct? But in terms of weight, ratio of hydrogen and oxygen in water is always 1:8. Correct? पानी आपको कहीं से भी मिले, इट इज अ कंपाउंड. तो पानी में किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से. तो पानी आपको कहीं से भी मिल जाए, जैसे केमिकल रिएक्शंस में बन रहा हो या नेचुरल सोर्सेस जो आपके हैं वहां से आपको मिल रहा हो, रेन के थ्रू आ रहा हो, रिवर में हो, सभी जगह जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बायोवेट रेशो है वो ऑलवेज 1:8 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. एंड इन लॉज ऑफ केमिकल फॉर्मुलेशन, our third law is law of multiple or simple proportion. Law of multiple or simple proportion is given by John Dalton in 1803. This law states when two elements combine to form two or more than two compounds, then the weights of the elements which combine with the fixed weight of the other bear a simple ratio to one another. That means जब कभी भी ऐसा होता है कि टू एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर के टू एंड मोर देन टू कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं. अब अगर उसमें एक एलिमेंट जो दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो रहा है, उसमें से किसी एक का जो मास रेशो है वो फिक्स है,
किसी भी एक एलिमेंट का बायोमास रेशियो यदि हम फिक्स करते हैं या फिक्स है, तो जो सेकंड एलिमेंट है जो इस फिक्स रेशियो एलिमेंट से कंबाइन हो रहा है वो ऑलवेज मल्टीपल प्रोपोर्शन में कंबाइन होगा और इन ए सिंपल रेशियो में कंबाइन होगा। चलिए इसको एग्जांपल देखते हैं। कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन टू वेज। फर्स्ट वे इज कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड CO, and in second way carbon combines with oxygen gives carbon dioxide. In above reactions 16 gram oxygen and 32 gram oxygen combines with a fixed amount of carbon 12 gram. Correct? Atomic mass of carbon is 12. Correct? Then see the ratio of weights of oxygen combines with 12 gram carbon. ऑक्सीजन का जो रेशियो है जो कार्बन के 12 ग्राम से कंबाइन हो रहा है इज 16:32 और 1:2। करेक्ट? 16:32 में कंबाइन हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए एटॉमिक atomic mass of carbon is 12, oxygen 16, and in second again atomic mass of carbon 12 and oxygen 16 2s are 32. So oxygen combines in 16:32 with carbon. Correct? This is our third law of multiple or simple proportion. Okay students, our next law is Gay-Lussac's law of gaseous volume. This law given by Joseph Gay-Lussac in 1880 and says when gases react together they always do so in volumes which bear a simple ratio to one another and to the volumes of the products if gaseous provided all measurements of volumes are done under similar conditions of temperature and pressure. That means gases जब भी एक दूसरे से रिएक्ट करती हैं तो वो हमेशा सिंपल रेशो में ही रिएक्ट करती हैं। ठीक है? बस बात इतना रखना है ध्यान में कि जितने भी गैसेस के मेजरमेंट्स हैं चाहे वो प्रेशर हो चाहे वो टेम्परेचर हो वो हमेशा सेम है ना। उनका प्रेशर टेम्परेचर अगर सेम है तो गैसेस ऑलवेज सिंपल रेशो में ही रिएक्ट करेगी। करेक्ट? चलिए एग्जांपल लेते हैं। 1 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 मोल क्लोरीन एंड गिव्स 2 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड। करेक्ट? यू कैन आल्सो से 1 volume hydrogen reacts with 1 volume chlorine and forms 2 volume hydrogen chloride. See, in between hydrogen chlorine and hydrogen chloride ratio is 1:1:2. 1:1:2. That means gases reacts always in a simple whole number ratio. This is Gay-Lussac's law of gaseous volume. Then our next law is Avogadro's law, given by Avogadro in 1811. This law says equal volumes of all gases under similar conditions of temperature and pressure contains equal number of molecules. है ना? मतलब अगर हम डिफरेंट गैसेस के सेम वॉल्यूम लें सेम टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है? डिफरेंट गैसेस के सेम वॉल्यूम लेते हैं सेम टेम्परेचर और प्रेशर,
तो उनमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऑलवेज सेम हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल से हम कह सकते हैं एट इक्वल टेम्परेचर एंड इक्वल प्रेशर इन कंटेनर्स ऑफ 2 liter each having hydrogen, helium, carbon dioxide and sulfur dioxide, there will be equal number of molecules. हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, अगर उनका वॉल्यूम सेम है और टेम्परेचर प्रेशर सेम, तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, है ना। ये सिंपल सा अवोगाद्रो का लॉ है। और आप ये भी कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले अवोगाद्रो ने ही दिया था, है ना। ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।